तो तुमको जदि पचारिबे ऑटो स्केलिंग विषय रे, राइट, let me tell you how you can explain. So first let's understand what is AWS auto scaling. So auto scaling is one of the service being provided by the Amazon Web Services, and it comes under the part of EC2. We already have seen that, right? So जो ऑटो स्केलिंग टा हमें यूज करिवा तो कौन पाई हमें एटा यूज एटा कौन एक्चुअली व्हाट इज इट, राइट? सो द नेम इज ऑटो स्केल, राइट? ऑटो स्केलिंग तो ऑटोमेटिकली स्केल अप बा स्केल डाउन करिवा कोनसी रिसोर्स को बा स्केल इन स्केल आउट करिवा बा ऐड करिवा रिमूव करिवा कमेबा बढ़ेबा आरी ऊपर ही ऑटो स्केलिंग काम करछ ए जो कांसेप्ट. So let's understand technically what auto scaling is. So basically auto scaling is a way to automatically scale up or down the number of compute resources that are being allocated to your application based on its needs at any given time. Means whatever applications you have running on the server. So how the application runs actually? We need a server. Suppose you are running a web-based applications. For that, you need a server to run, right? So every application, it uses the compute power or the compute resources, right? So resources means here it will be compute resources will be our memory, storage, processors, right? All these it will be using in backend, right? The applications will be using in the backend. तो बेले बेले कौन हुए ना से application सब जिते बड़े customer बढ़ी गले तो बेसी कौन हला application hit हला तो जिते application hit हो application सेते run हो right? सेते times run हो तो जिते time consume run हो सेते time से कौन resource सब consume करिवो तो रिसोर्स कंज्यूम कले हमर कोन ना जति कि रिसोर्स हम अलॉट करी थिबा गोटे सर्वर रे बा गोटे एप्लीकेशन पई रिसोर्स सब कोन हो obviously कमी आसीबो, राइट? तो तो रिसोर्स कमी आसीबो तो हमर एप्लीकेशन में परफॉर्मेंस डाउन होबो, राइट? इट विल डिग्रेड द परफॉर्मेंस. तो से केस रे हमें जदी ऑटो स्केलिंग यूज करिबा तो ऑटोमेटिकली कोन करिवो ना से रिसोर्स कैपेसिटी को बढ़ाई दब. जदि हमें 5 GB रो स्टोरेज सॉरी 5 GB रो रैम नहीं चाहिए तो अधिक रैम दरकार then we can increase it to accordingly to suppose 10 GB RAM. Or suppose we have taken some storage and that storage is going to full, then we can increase the storage. Those are the resources we can increase. That is scale up and scale down. We can do it. We can increase and decrease. So what it does, it helps you to ensure that you have the correct number of Amazon EC2 instances available to handle the load of your applications. So the resources and the number of instances, if you want to add also, you can add it. So you make sure that every time, whatever the servers, the number of servers you want, you can add it. Okay, so both the resources as well as if you want the number of servers to be used, you can do that. So suppose there are different type of scalings are there. So now we know what is that automatically scale up and scale down the number of resources. Let's see what type of scalings are there. There are different type of auto scalings are there. So horizontal scaling, that means horizontal scaling means that you scale by adding more EC2 machines into your pool of resources. So pool of resources will be number of EC2 instances you are going to add. So horizontally you work, that is actually called one of it is but scale in and scale out. Means जो pool हमें create करिबा से pool of resource रे scale in करिबो आउ हमें जदि चाहिबा बाहर करिया पे out कर दो, scale in scale out.
Okay, so with horizontal scaling, it is often easier to scale dynamically by adding more machines into the existing pool. जो existing pool अच्छी, suppose here हमारा auto scaling group रे हमारा data server add करिचे. तमें चाहो तब applications तमें increase करे पे suppose application resource load body ला right automatically से कौन करबे आउटे instance add कर दो आउटे तब आउटे 35 up to 5 resources we can add right. तो similarly किसी यदि automatically हमारा load कमी आसीला right तो सेतिरे कौन होबो ना automatically से decrease remove भी करि दबो right. तार benefit कौन जदि आमे कौन ऑटो स्केलिंग यूज करूनी मैनुअली सब करूचे राइट कौन धर आम एप्लिकेशंस आमे जानिले हमरो दुईटा वर्तमान दुईटा जेमति अछि वर्तमान दुईटा सर्वर रे हमरो EC2 इंस्टेंस रे हमरो एप्लिकेशंस रन होउछ राइट. सपोज टुमारो दैट इंक्रीज्ड राइट तो हमरो बिजनेस बढ़िला तो हमरो अधिका रिसोर्सेस दरकार तो आमे कोन करे मैनुअली आ गोटे सर्वर ऐड कर दबा आउरी एप्लिकेशंस इंस्टॉल हेला सेम एप्लिकेशन सर्वर रे यदि पुणी एक्स्ट्रा इंक्रीज हैला तो हमें आउ गोटे सर्वर ऐड कर दो राइट. तो एटा कोन हलो मैनुअली हमको गोटे गोटे ऐड कले चारटा ऐड कले बट सपोज जदि हमें कोन हमर एप्लिकेशंस हठात स्पाइक हेला एति के हमें ऐड कर देले तापर हमर एप्लिकेशंस एते यूज हलानी डाउन हेला रिसोर्स एते हिट हलानी राइट माने रिसोर्स एते यूज हलानी बहुत सारा फंक्शन तापर हमें कोन करबा से जगह रे बेसिकली हमें रिमूव करिबा राइट. तो जते पर्यंत हमें रिमूव न करथिया मैनुअली सेते पर्यंत अननेसेसरी वी आर गोइंग टू पे फॉर दिस टू सर्वर्स राइट unnecessary we are going to pay for this server. If it is being used then it's okay. If not used then we have to remove these servers manually. Until we remove these manually that whatever the cost being charged we have to pay for that. Instead what you can do we can set off a auto scaling so that automatically it will increase and automatically it will decrease. Scale in, scale out, it will do the resources. That's why it's the benefits of it. Because this is a horizontal scaling. So what is then next? It's a vertical scaling. The vertical scaling, what happens? I was talking about the scale up and scale down, right? So in vertical scaling, so जोटा कि हमें रिसोर्स उपरे कंप्यूट पावर उपरे काम करिवे सेतरा हमें कोन नंबर ऑफ रिसोर्स नंबर ऑफ सर्वर्स हमें ऐड कले बा आउट कले सब्सट्रैक्ट कले तो एठी हमें कोन कर रिसोर्स को बढ़ेबा आउ कमेबा. तो वर्टिकल स्केलिंग मींस दैट स्केलिंग ऐड मोर पावर टू एन एक्जिस्टिंग EC2 तमरो गोटिए मशीन अछि तो तम सेठी कोन करलो ना तम सेही मशीन को आउ गोटे सर्वर न नै कि तमे कोन करबो ना सेही पर्टिकुलर मशीन रे तमे कोन करबो increase कर दो. बर्तमान देखो ये T2 माइक्रो सपोज यूज होईची 1 वर्चुअल CPU 1 GB ऑफ मेमोरी सपोज तमरो मोर रिसोर्स दरकार पड़िला राइट तो ऑटोमेटिकली कोन करबो ना तमे आको इंक्रीज कर दो अप टू 2 वर्चुअल CPU 8 GB ऑफ मेमोरी एंड टाइप चेंज टू M5.large. सो एठी कोन हला गोटिए मशीन रहिबो तमरो बट तमर रिसोर्स कैपेसिटी चेंज्ड द रिसोर्स configuration changed. So कौन होगा से एप्लीकेशन तमरो इजीली रन हला तो वर्टिकली हमें रिसोर्स कैपेसिटी को बढ़ाई देले दैट इज स्केल अप. आ जदी एटू हमर दरकार नहीं एते धर कैपेसिटी एप्लीकेशन पुनी डाउन हला हमर एते यूज हलानी एते बड़ रिसोर्स अननेसेसरी व्हाई वी आर गोइंग टू पे फॉर दैट त हमें कोन करबा डाउन कर दबा तो ऑटोमेटिकली डाउन टू द previous one. So that is being used in vertical scaling. So vertical scaling usually means upgrade of server hardware. So when the server hardware automatically upgrade culture, then you can go with the vertical scaling. It is often limited to the capacity of a single machine. Scaling beyond that capacity often involves downtime and comes with the upper limit. What it says? It is often limited the capacity of a single machine. So ए जगह रे कोन होछि ना हम गोटे सिंगल मशीन जति कैपेसिटी सेति की हमें सेटअप को ताटू अधिका जदी स्केल हो बियॉन्ड दैट देन
will face some downtime. Okay, this is the vertical scaling. Instead, we can go for horizontal scaling where we can add more EC2 instances, right? Okay. So different auto scaling components we'll see. So जेतबेला हम गोटे auto scaling setup करिबा ता भितर हम सब ई सब पर्टिकुलर कंपोनेंट्स ऊपर डिस्कशन करिबा कोन ग्रुप्स कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट्स स्केलिंग ऑप्शंस तो ग्रुप्स कोन हमको जेमति कि हमें लोड बैलेंसर देखितले गोटे टारगेटेड ग्रुप क्रिएट करतले बा सेही ग्रुप रे कोन हमें किछिटा सर्वर को रजिस्टर करतले जोटा कि हमर लोड बैलेंसर यूज होतले तो एटी भी सेमति सिमिलर कांसेप्ट वी आर गोइंग टू फॉलो इन ऑटो स्केलिंग where we are going to set up a group तमाने कोन हमको कोन दरकार को सेट दरकार माने हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बा वर्टिकल स्केलिंग पे हमको कोन दरकार जो सिस्टम दरकार बा कॉन्फ़िगरेशन दरकार को केते पावर रिसोर्सेस हमें यूज करो कंप्यूट रिसोर्स यूज करो राइट सही हिसाब रे तो EC2 instances are organized into groups so that they can be treated as a logical unit for the purpose of and management. When you are created a group, you can specify the minimum, maximum and desired number of EC2 instances. केतेटा तुमको EC2 instance गोटे ग्रुप रे तुमे सेट करिवो राइट तो ये इमेज तमे देखि परतो एटर मिनिमम साइज तुम केतेटा दरकार तो मिनिमम हमको गोटे मशीन दरकार मैक्सिमम केते दरकार तमे डिजायर्ड कैपेसिटी केते राइट ताको सब तमे सेटअप करियो गोटे ग्रुप रे जोटा कि तमे ऐड करियो ऑटो स्केलिंग तमे कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट कोन होछ ना जो EC2 इंस्टेंसेस ग्रुप रे ऐड करिवो कोन तुमको दरकार गोटे तले लैपटॉप तमे किनुछ लैपटॉप रो कोन तमे कॉन्फ़िगरेशन चेक करूछ राइट को कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप तुमको दरकार हमें ऑलरेडी जानि छै EC2 रे हम डिस्कशन करिछ गोटे सर्वर नेला पूर्वरु नबा पूर्वरु हम रिक्वायरमेंट हिसाब रे कॉन्फ़िगरेशन चेक करिबा हम कोन कॉन्फ़िगरेशन दरकार आइदर उबुंटू मशीन दरकार अमेज़न लिनक्स की विंडोज मशीन दरकार राइट then we'll check about the other configurations like memory, storage, resources, networks, everything, right? That comes under the configuration template. Already, हमें template विषय रे जानी छे, right? Last class रे भी हमें template create करतले, modify करतले छे template, right? today configuration template को जंती, right? So, एतरे कौन करबे हमरा? Configurations template EC2 instances माने कौन Amazon image जोड़ा machine image टा Amazon machine image instance type कौन जो key pair कौन जो security group right ये सब already उटे template हमें create करिबा तबे scaling option रे हमें check करिया कौन को type रो scale हमको दरकार है either horizontal scaling दरकार है but dynamic scaling what is horizontal vertical scaling required right so डायनामिक जो स्पेसिफाइड कंडीशंस हम कौन दरकार सही हिसाब रे हम स्केलिंग ऑप्शन रे चूज करिबा देखिबा डाला तो स्केलिंग ऑप्शंस आछि डिफरेंट स्केलिंग ऑप्शंस आछि मेंटेन करंट इंस्टेंस लेवल्स एट ऑल टाइम स्केल मैनुअली स्केल किछि करिबा स्केल बेस्ड ऑन ए शेड्यूल scale based on the demand and use predictive scaling so predictive scaling we are using artificial intelligence most of the companies they're using predictive scaling and there they use artificial intelligence okay so minimum current instance level at all time ta mane माने सबु बेले मते कोन मिनिमम जहा मु सिलेक्ट करछि गुटे कि दुईटा माने मते सेतिकी ही दरकार I need only 2 machines means 2 machines all the time right so scale manually okay let's discuss more on this so maintain current instance levels at all times suppose एडी कोन अछि चारिटा वेब सर्वर अछि suppose okay चारटा वेब सर्वर अछि तो एटा चारटा को वेब सर्वर कोन मेंटेन करियो सब बेले मते चारिटा वेब सर्वर ही दरकार ओके चारटा सब बेले चारिटा ही दिबा दरकार so we can configure at auto scaling group to maintain a specified number of running instance at all time suppose किछि गोटे प्रॉब्लम होला गोटे डिस्कार्ड हे गेला से कोन करियो ऑटोमेटिकली आ गोटे क्रिएट कर दबो so that we'll have all the time 4 instances right so itala maintain the
current instance levels at all time. Jab set करते हैं. So when EC2 instance auto scaling finds an unhealthy instance, it terminates that instance and launches a new one. जो टाइम कहले इटा जदी terminate हे गला तो आ गोटे से कोन करबो create कर दो. तो so it will maintain the number of current instance level. जहाँ भी हमें setup करते हैं सही हिसाब रे maintain करी रखिबो सब बेले. Okay. तापर scale manually. तो एथिरे प्रॉब्लम कोन होउची ना unnecessary तमरो चारिटा सपोज सर्वर क्रिएट करछे चारिटा तमरो चारिटा जगह रे एते यूज होनी दुईटा सर्वर रे काम होई जाउची माने दुईटा सर्वर रो रिसोर्स पावर रे your applications are running fine and it's serving the purpose of the applications and managing the customers and there is no downtime, nothing is happening with the two servers. So the other two will be wasted, right? Unnecessary two resources will be all the time, it will be running, but you need it. So it's not required. So here we'll get some kind of drawbacks, right? So if we go to scale manually, so manually suppose ଆମର ତିନିଟା ଅଛି already resource ଆମ application ଯଦି ଅଧିକା ଦରକାର ପଇଲା ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆଉ ଗୋଟେ add କରି ପାରିବା ତାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ପଇଲା ଆଉ ଗୋଟେ add କରି ପାରିବା ଯଦି resource କମି ଗଲା then ଆମେ remove କରିଦବା ଯଦି application request କମି ଗଲା remove ବି କରି ପାରିବା right ତ ଏଟା ହେଲା scale manually ତ manually हमको ସେଇ ହିସାବରେ manual scaling is the most basic way to scale your resources where you specify only the changes the maximum and minimum केती तुम maximum दरकार केते minimum दरकार manually तुम set करियो तापर से scale based on a schedule माने based on a schedule है कौन तमे गोटे particular time दे दो ए particular date suppose Independence Day sale suppose you have an e-commerce website and you're targeting suppose Indian people okay and what happens suppose Independence Day you want to put some Independence Day sale in your application e-commerce site obviously your applications will be hit during those periods right more customers will connect to your server that time definitely there will be increase in the load to make that load and you'll set off in the auto scaling group that in between August 5 to 20 make these many servers or may add these many servers to the applications or add these many servers to the auto scaling so you can just set it off that so automatically कौन हम से pull रे all out दीटा जदी तमर दुईटा server run होची तो सही particular time frame रे तो out दीटा आड़ी जो so scaling by schedule means that scaling actions are performed automatically as a functions the time and date हिसाब रे तमे सर्वर क्रिएट करिया पे चाहूचो रिसोर्स ऐड करिया पे चाहूचो तो बेस्ड ऑन शेड्यूल आउ छी बेस्ड ऑन डिमांड तो बेस्ड ऑन डिमांड जेतोले कोन होची ना तमरो एप्लीकेशंस जो धर तमे गोटे एप्लीकेशंस नो एप्लीकेशन गोटे डिजाइन कर currently few customers are accessing your application there are not much load into the server and suppose sometime gradually right your application got some popularity and more customers are going to access your applications what will happen that will increase the load on your server on your applications which basically we need to increase the resources also so for that what you can either you can go manually which is a task manual task right or you can set off based on the demand so once the demand increases then automatically it will add one more server to fulfill the demand how it can be done by using the load balancer we can set up a load balancer there right so in auto scaling group then we can set up the load balancer to make it so here in the auto scaling we can set it up based on the demand it will increase the more demand comes it will the auto scaling will set up accordingly to increase the so we can set it off the routing mechanism there by using load balancer route 53 to route those traffics based on the things right so next predictive scaling जोटा कि AI यूज होची prediction right so
predictions means so what it says, predictive scaling, a feature of AWS Auto Scaling uses machine learning, AI, artificial intelligence, or ML, AI/ML, to schedule the right number of EC2 instances in the anticipations of the approaching traffic changes. It predicts future traffic, including regularly occurring spikes, and provisions the right number of EC2 instances. That means, so obviously we know that, right? AI only works based on the data, right? So whatever the data you have, based on the data, the predictions works. So your application, suppose being used for many years, and now you have sufficient data to predict that during these times, during these periods, our applications gets more heat. For those time, it should automatically increase the resources. So we can go with the predictive scaling. Okay. Now you understood about any doubt, guys? Right? Okay. So what we can do now, let's go to the okay. So I'm theoretically बुझीगले auto scaling कौन, type of auto scaling, right? The auto scaling basically काम कौन, right? How केते प्रकार ऑटो स्केलिंग माने वेरे हमें सेट करि परिबा, राइट? ऑटो स्केलिंग ऑप्शंस आर देयर. सो हमें कोन करिबा एबे ऑटो स्केलिंग को सेटअप करिबा. तो ऑटो स्केलिंग हमर कोन जानि छै, द सेम EC2 सर्विस भीतर ही हमर ऑटो स्केलिंग ऑप्शंस अवेलेबल. तो ऑटो स्केलिंग जीवा, ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स. तो हमें फर्स्ट कोन करिबा, गोटे ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स सेट करिबा, क्रिएट करिबा, राइट? See, minimum size, desired capacity, maximum size, we have set it off in auto scaling. How मन रखता auto scaling जेहेतु हमरो free tier भितर आसुनी, माने obviously तमर जदी किछि extra resources create होची, then you have to pay for that, right? Be careful when you are creating these auto scaling things. So let's go. Create auto scaling group. Choose launch template. तो एटी हमें launch template तो की करबो launch template हमें code use करिचे. So before we are creating this group, we should first create the launch template, right? Where we can find this launch template? Let me show you. If I go to EC2 instance भितर जदी जीवो instances हमर launch templates अछि. तमे लास्ट क्लास रे हमें काली रो क्लास रे हमें देखितले, राइट? लास्ट क्लास रे हमें देखितले कोन लॉन्च टेम्पलेट मु गोटे क्रिएट करतली, मॉडिफाई करतली. तो मु एटी जदी लॉन्च टेम्पलेट्स को जीवी, ऑलरेडी मो पाखरे गोटे टेम्पलेट अछि. तो हमें जानि छ गोटे टेम्पलेट ता कोन होछ, कॉन्फ़िगरेशंस ऑलरेडी हमें जहा जहा रिक्वायरमेंट आम हिसाब रे ऑलरेडी कोन से डिस्क्रिप्शंस हमें ऑलरेडी सिलेक्ट करी कि टेम्पलेट भीतर हमें रखिचे. तो सही टेम्पलेट हमें यूज करिया. तो हमें चेक करिया कोन अछि टेम्पलेट भीतर. तो डिटेल्स ए AMI आईडी यूज हेची, इंस्टेंस टाइप एटा, सिक्योरिटी आईडी एटा रहिची, राइट? तो स्टोरेज केते कोन स्टोरेज वा रिसोर्स टैग्स कोन, नेटवर्क इंटरफेरेंस कोन, एडवांस डिटेल्स रे हमें कंप्लीट डिटेल्स जानि परिबा तो कोन कोन यूज हेची. तो फर्स्ट थिंग हला तमे गोटे टेम्पलेट क्रिएट करिवो. ओके, तो लेट मी गो अहेड एंड क्रिएट अ टेम्पलेट. दिस टेम्पलेट इज ऑलरेडी created, right? So let me go ahead and create a template. Suppose I'll go again, create a template. Suppose we give like the template name I'll give auto scaling demo, right? Auto scale demo template ना देला auto scale demo पे template हमें create करचे demo template demo template. Alright, so template versions हम खाली दे दो जो demo इस दरकार नहीं. तो जदि किसी टेम्पलेट अच्छी तमे रिसोर्स करिया पे, then you can go ahead and source it. I'm not going to source it. I'll show you how we can create it again. So image template तमे कोन इमेज तमे रिक्वायरमेंट हिसाब रे को इमेज AMI तमु दरकार, राइट? तमे इट सिलेक्ट करियो. तो जदि क्विक स्टार्ट को जीवी आइदर सपोज मु गली Amazon Linux. ओके,
तापर एठी मु कोन सिलेक्ट कली जोटा दरकार मते से इमेज इमेज सिलेक्ट कली तापर इंस्टेंस टाइप एठी तुम सिलेक्ट करियो को टाइप इंस्टेंस तुमको दरकार ट्यूटो माइक्रो मु सिलेक्ट करछि जोटी फ्री टियर भीतर आसुछि की पेयर तुमको दरकार जेमती हमें टेम्पलेट क्रिएट करछि ऑलरेडी सेटा तुमको देखै दोछि आउतरे केमती करियो सपोज आंसबल डेमो की मु सिलेक्ट कली ता सहित सबनेट्स बाय डिफॉल्ट लेट इट बी सो क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप आ जदी एक्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप अछि तुम सिलेक्ट करियो तुम जे एक्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप सिलेक्ट कर देली स्टोरेज डिफॉल्ट जहां रहउछि छाड़ दियो बाकी किछि तुमको दरकार नै राइट तो हमें कौन करवा क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट तमर गोटे कौन टेम्पलेट आम क्रिएट करदे तापर EC2 इंस्टेंस को जीवा उतरे ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप तो ग्रुप क्रिएट करिया आगरु मन रखता हमको गोटे टेम्पलेट लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट करिया पड़िबो ओके तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप नेम मु देखि देली मु द सपोज दोछि माय एसएल ग्रुप माई एसएल ग्रुप ऑटो स्केलिंग ग्रुप लंच टेम्पलेट एठी तमे सिलेक्ट करिवो को टेम्पलेट तमे यूज करिवो त हमर वर्तमान केतरा बीटा टेम्पलेट थिबो राइट गोटाला L23 मु देछि आ गोटे देछि ऑटो स्केल डेमो टेम्पलेट तो हमें जोटा वर्तमान क्रिएट कले सेटा मु सिलेक्ट कर देली डिफॉल्ट वर्जन तार गोटी ही वर्जन अछि तो सही वर्जन मु चूज कली तापर नेक्स्ट ओके नेक्स्ट एटी कौन नेक्स्ट रे चूज इंस्टेंस लॉन्च ऑप्शंस एटी तमे केमती तमे इंस्टेंस को लॉन्च करिया पई चाहूचो ओके ये सब ऑप्शन रे तमरो बाय डिफॉल्ट मु सब नै गली ओके तो अवेलेबिलिटी जोन तमको जोन्स तमे सिलेक्ट करियो सपोज मु बीटा सिलेक्ट कर दोची 1A 1B सॉरी 1A 1B दे दोची बीटा रखुची मिनिमम जोन्स यू हैव टू सिलेक्ट तापर अवेलेबिलिटी जोन डिस्ट्रीब्यूशंस रखुची कोन बैलेंस्ड बेस्ट एफर्ट इफ लॉन्चेस फेल इन अवेलेबिलिटी जोन गोटर फेल हले देन अटेम्प्ट टू अनदर अवेलेबिलिटी जोन रे से सेते हम दीटा सिलेक्ट कर देली ठीक अछि नेक्स्ट तापर जदि हम किछि लोड बैलेंसर ऐड करिया पई चाहूचो देन तुम ऐड करि पारिबो अदरवाइज यू कैन लीव इट ओके तुम लोड बैलेंसर अछि देन वी कैन ऐड अटैच एन एक्जिस्टिंग लोड बैलेंसर सिलेक्ट करियो लोड बैलेंसर ऐड करियो तो मते वर्तमान लोड बैलेंसर ऐड करियार नाही मु तुम गोटे वीडियो ऑलरेडी वीडियो गोटे अछि जोटा लोड बैलेंसर लिंक करिया पई बनै छि हम तुम शेयर कर दे तुम देखि कि तुम निचरा तुम पई टास्क गोटे देबी तुम देख सेटा करिवो ठीक अछि तो वर्तमान नो लोड बैलेंसर मु सिलेक्ट कली VPC lattice integrations option no VPC किछि VPC lattice यूज करूनी जोटा कि नेटवर्क इंप्रूव करबा पई एप्लीकेबल ARC रिकवरी कंट्रोलर इट तो एठी कोन तुम बहुत पैसा पड़े जेटा तुम न्यू ऑप्शन गोटे ऐड करछि जनरल से हेल्थ चेक्स तुम दे किछि हेल्थ चेक करया पई चाहो ऐड करो अदरवाइज लीव इट 300 सेकेंड्स जो चेक रहउछि नेक्स्ट ओके एठी हमको देखिया पड़ा ग्रुप साइज टा को तो डिजायर्ड कैपेसिटी 1 ओके डिजायर्ड कैपेसिटी 1 रहबो मिनिमम 1 मुझे देखि डिजायर्ड कैपेसिटी 2 कर दो ठीक अछि डिजायर्ड कैपेसिटी 2 मिनिमम डिजायर्ड कैपेसिटी 1 मैक्सिमम डिजायर्ड कैपेसिटी 2 परफेक्ट तो मेटी कोन कली मैक्सिमम डिजायर्ड कैपेसिटी सपोज कर देली 3 लोड हिसाब रे मोर बॉडी हो राइट इक्वल और ग्रेटर देन द डिजायर्ड कैपेसिटी से तो इक्वल रहबो किंबा ग्रेटर देन रहबो 2 रखि परिबो किंबा 2 3 2 5 2 6 किंबा लेस हबनी ओके आइदर 2 और मोर देन दैट डिजायर्ड कैपेसिटी रखि छि 2 सेति पे रखली 3 किंबा तुम हिसाब रे तो मैक्सिमम केते नहीं पारिबो तमरो एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट हिसाब रे तो एटी हमें पॉलिसी सेट करिवा जो पॉलिसी विषय रे हमें वर्तमान डिस्कशन करले राइट तो कोन ऑटोमेटिक स्केलिंग ऊपर चूज वेदर टू यूज टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी एटा ऑप्शनल रहउची ओके तापरे इंस्टेंस मेंटेनेंस पॉलिसी सब कोन पैसा वाला कंट्रोल कॉस्ट एंड फ्लेक्सिबल तो सही हिसाब मु नो पॉलिसी यूज करली तापर असल एडिशनल कैपेसिटी सेटिंग्स किसी कैपेसिटी रिजर्वेशन मते दरकार नहीं जे तुम फ्री टियर यूज करूची राइट एडिशनल सेटिंग्स लीव इट एज इट इज नथिंग रिक्वायर्ड नेक्स्ट उसला ऐड नोटिफिकेशन तमे चाहो जदी नोटिफिकेशंस करिया पे देन तमे गोटे SNS टॉपिक ऐड करि परिबो ओके हम किसी नोटिफिकेशन दरकार नहीं SNS टॉपिक रो देन नेक्स्ट ऐड टैग्स
जहाँ ना दवा गोटे टाइप गोटे दवा कथा दे दो दैट्स ओके रिव्यू चेक कर दो आउथरे कौन सब अच्छी क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप तो एटी कौन हम जदि मु क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्लिक कली ता माने कौन हला सी गोटे ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट कला तो से ग्रुप रो स्केलिंग जो डिजायर्ड कैपेसिटी अच्छी जो ग्रुप कॉन्फ़िगरेशंस राइट हमर डिजायर्ड कैपेसिटी अच्छी कौन 2 दैट मींस हमर ऑटो स्केलिंग ग्रुप सब बेले चेष्टा करिवे जे मते दीटा इंस्टेंस क्रिएट करिकरी कौन दब राइट लेट्स सी कौन कली क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप तो ये कौन है ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएला स्टेटस है अपडेटिंग द कैपेसिटी तो कैपेसिटी अपडेट करछे तो इट विल टेक सम टाइम डिजायर्ड कैपेसिटी 2 मिनिमम इज 1 मैक्सिमम इज 3 दीटा अवेलेबिलिटी जोन रु जेकोन अवेलेबिलिटी जोन ने से रन करबो राइट तो वर्तमान जीरो इंस्टेंसेस अच्छी किछि इंस्टेंस है जेतु मु क्रिएट करली कोन गोटे ऑटो स्केलिंग ग्रुप रो डिजायर्ड कैपेसिटी देछि मु 2 तो मते दरकार मिनिमम गोटे बट आम डिजायर्ड मु चाहूची मते दुईटा मशीन दरकार तो एबे कौन करबा ना ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप आम पई कौन दुईटा मशीन ऑटोमेटिकली क्रिएट करबो को हिसाब रे न जो टेम्पलेट आमे सिलेक्ट करिचे टेम्पलेट रे जहा जहा कॉन्फ़िगरेशन देइचे से हिसाब रे आम पई दुईटा मशीन से नै जिवो लेट्स सी रेनी जदि एबे EC2 इंस्टेंस को जीबी लेट्स सी टू गो टू इंस्टेंसेस hold on auto scaling groups still updating the capacity okay hold for some time okay ता भीतर हमें देखि दबा तो डिटेल्स कौन रोजी डिजायर्ड इट पूरा कंप्लीट डिटेल्स सेक्शन रे हम देखि दबा कौन डिटेल्स हम रही थी स्केलिंग लिमिट्स मिनिमम 1 2 3 भीतर रहइबो स्टेटस स्टिल अपडेटिंग कैपेसिटी बाकी सब डिटेल्स जेटा है टेम्पलेट डिटेल्स हम टेम्पलेट रे कौन लॉन्च टेम्पलेट रे सिलेक्ट करिचे ता सब डिटेल्स आसी गला एठी राइट देन हेल्थ चेक्स भी से देखुची EC2 कौन सब हेल्थ चेक्स रहउची राइट हेलो ऑटोमेटिक स्केलिंग हमें ऑप्शंस जो ऑटोमेटिक स्केलिंग ऑप्शंस ता जा भी हमें बर्तन ऑटोमेटिक स्केलिंग ऑप्शंस भीतर जो पढ़िले ये सब स्केलिंग ऑप्शंस जा पढ़िले राइट सेटा तमे चाहूछ करे बर्तन हम सिलेक्ट करछि किछि पॉलिसी हमर डायनामिक ऑटोमेटिक स्केलिंग सिलेक्ट हेइनी हमें चाहूछ जदी चेंज करिबा पई देन वी कैन गो अहेड एंड क्रिएट डायनामिक पॉलिसी विषय देखे जो जोटा में पढ़िले पॉलिसी टाइप तुमको स्टेप स्केलिंग सिंपल स्केलिंग पॉलिसी नेम ओके मैट्रिक टाइप्स को हिसाब रे सीपी यूटिलाइजेशन तुम जदी अधिका बढ़ी जीवो तुम चाहूछ क्रिएट करिया पई देन वी कैन गो अहेड एंड क्रिएट इट ओके तो ए हिसाब रे तुम पॉलिसी टाइप सिलेक्ट करि परिबो तो बाकी कोन होची ओके सो एटी गोटे अच्छी प्रेडिक्टिव स्केलिंग तुम एटा कौन आम देखले डायनामिक स्केलिंग जोटा हमर यूज करिया प्रेडिक्टिव स्केलिंग तुम सेटअप करिया चाहछो प्रेडिक्टिव स्केलिंग देन यू कैन गो अहेड एंड क्रिएट प्रेडिक्टिव स्केलिंग ना गोटे दल टर्न ऑन स्केलिंग सीपी यूटिलाइजेशन से तार प्रेडिक्ट करी ऑटोमेटिकली प्रेडिक्शन करिवो ओके तो नेक्स्ट अच्छी कोन scheduled options हमें जो based on the schedule right auto scaling based on the schedule so we can go ahead and based on the schedule we can set it out these are the options currently available to do that okay now let's go ahead and refresh it see हम refresh कले कोन होला हमर status कोन होला बर्तमान एक्टिव हे गेलानी desired capacity 2 हमर instances दुईटा देखौछि सी तामने से कोन ए ऑटो स्केलिंग ग्रुप कोन कला हमर टेम्पलेट हिसाब रे जो टेम्पलेट हम यूज करतल ऑटो स्केलिंग डेमो टेम्पलेट based on that it created now see it created two instances data instance बर्तमान क्रिएट हे गेला तुम एबे जिबे इंस्टेंस को चेक करिवि सी ऑटोमेटिकली हमें किछि क्रिएट करने हम खाली ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट कली बट से मो पई कोन गला दुईटा मशीन ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दला तो दुईटा मशीन क्रिएट कोन पई कला ना मोर डिजायर्ड कैपेसिटी कोन मु 2 देइछि सेति पई से कोन कला ना दुईटा क्रिएट कर दला
ମୁଁ ଯଦି desired capacity 4 ଦେଇଥାନ୍ତି then 4ଟା machine ମୋ ପାଇଁ create କରିଥାନ୍ତା right ତ minimum 1 maximum 3 ତ 3 କେତେବେଳେ ହବ ନା ଯେତେବେଳେ ମୋର application ଯଦି ଏଠି କିଛି run କରଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ server ରେ ତ application load ବଢିଲା ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ କଣ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ machine create ହେଇକି automatically up to maximum 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି desired capacity କଣ ଆମେ desired capacity select କରିଥିଲୁ 2 so what will happen if I terminate this one let me terminate ମୁଁ ଗୋଟେ machine କୁ କଣ କରୁଛି terminate କରୁଛି କିଏ କହିବ ମତେ କଣ ହବ ଏଠି ଟର୍ମିନେଟ୍ ହବନି shut down କର ହେଇଗଲା ତ ଆମେ ମିନିମମ୍ 2 ଦେଇଛେ ନା ସେଟା ଆସିଯିବା କଥା ପୁଣି ରିଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବା କଥା exactly so କଣ ହବ ନା automatically ସେ କଣ କରେ ଆମର ଯୋଉ 300 seconds ଦେଇଛେ health checks right 300 seconds check କରିବ machine ଦିଟା ଆମେ ଯୋଉ select କରିଛେ desired capacity ଦିଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ terminate କରିଦେଲି ସେ କଣ କରିବ desired capacity ହିସାବରେ health check କରିବ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ automatically create କରିଦବ ଏଟା terminate ହେଇଗଲା right ମୁଁ terminate କରିଦେଲି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଲା ସପୋଜ ଟର୍ମିନେଟ ହେଇଗଲା ସେ କଣ କରିବ ନା ଅଟୋ ସ୍କେଲିଂ ଗ୍ରୁପ କଣ କରିବ ନା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ କ୍ରିଏଟ କରିଦବ ମେସିନ ସେ ସବୁବେଳେ ମେଣ୍ଟେନ କରିବ ଯେ ଯେତିକିଟା ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛେ ଡିଜାୟାର୍ଡ କାପାସିଟି ସେଇ ହିସାବରେ ସେ କଣ କ୍ରିଏଟ କରିଦବ ରାଇଟ ଲେଟ୍ସ ସି ଯେହେତୁ ଆମେ ମିନିମମ ରଖିଛେ 1 ମିନ୍ସ ଆମେ ଏଟାକୁ ଟର୍ମିନେଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ କେବଳ ଗୋଟେ ଟର୍ମିନେଟ କଲେ ତ ଆଉ ସେ 300 seconds ପରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି କଣ କରିବ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ କରିଦବ ରାଇଟ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଯଦି ଯିବା ଅଟୋ ସ୍କେଲିଂ ଗ୍ରୁପ ରେ ଚେକ୍ କରିବା ତ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ 2 ମୁଁ ଲୋଡ କରୁଛି ଆକୁ ଆଉଥରେ ଡିଜାୟାର୍ଡ କ୍ୟାପାସିଟି ସେ ତଥାପି ହେଲ୍ଥ ଚେକ୍ ସରିନି ତାର ଚଲେଇଛି ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଓକେ ସେ ଷ୍ଟିଲ ପେଣ୍ଡିଂ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ କରିଦେଲା ସି ଗୋଟେ ଅଛି ଇନ ସର୍ଭିସ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡିଂ ରେ ଅଛି ଲାଇଫ ସାଇକେଲ ପେଣ୍ଡିଂ ରେ ଅଛି ଆଇଦର ଏଟା ଟର୍ମିନେଟ ହଉଛି କିମ୍ବା କ୍ରିଏଟ ହଉଛି ଲେଟ୍ସ ରିଲୋଡ ଇଟ इन सर्विस आ गोटे इमिडिएटली क्रिएट करदेला देख बर्तमान मुझे जब इंस्टांस को जीवी चेक करी टर्मिनेट थिला एबे रिफ्रेश करूची देख से आ गोटे क्रिएट करदेला टर्मिनेट हे गला गोटे मु करदेली से ऑटोमेटिकली आ गोटे क्रिएट करदो तो सेति पय हमर ऑटो स्केलिंग जहां भी हिसाब रे हमर मिनिमम डिजायर्ड कैपेसिटी हम जहां देथिबे सही हिसाब रे से क्रिएट करी रखियो जदि हमर किछि माने कोन एप्लीकेशंस कस्टमर इनक्रीज हेले एप्लीकेशन लोड बढ़िला तो से कौन करिवो रिसोर्स दरकार हेले से ऑटोमेटिक आमे देइचे कोन मैक्सिमम डिजायर्ड कैपेसिटी 3 तो माने से 3टा सर्वर क्रिएट करियो जब ताटू अधिका लोड बढ़ला हम सर्वर कैपेसिटी हेलानी तो ऑटोमेटिकली कोन से ऑटोमेटिकली क्रैश हे जिवो कारण आउ आमे एक्स्ट्रा ऑप्शन देइने बढ़िबा में आइदर हमको मैनुअली इंक्रीज कराय पड़िबो नले डिजायर्ड मैक्सिमम डिजायर्ड कैपेसिटी को टिके बढ़िबा को पड़िबो राइट तो इटा हला तमरो logics behind the auto scaling केमती काम को auto scaling group कौन type of auto scaling आउ तारा कौन various options रोची केमती auto scaling set करिवो desired माने कौन minimum कौन पाई maximum कौन पाई देउची अब विषय सब जानिला क्लियरली राइट तुमको टास्क हैला जहां भी आज हमें पढ़िले राइट ताको कंप्लीटली तमे प्रैक्टिस करो आउ नेक्स्ट क्लास रे हम क्वेश्चंस पचारिबी आउ परे ओके ता पूर्व तुम बतै दोची सी तो आमे तो देखिले एठी जदी सर्वर आमे डिलीट करबा तो ऑटोमेटिकली ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करछि तो आको आमे डिलीट केम करबा अनेसरी आमे ताको छाडी परिबनी अनेसरी से कोन करबा हमकु चार्ट्स पकेबा तो आमे कोन करबा एठी आमे डिलीट कले ऑटोमेटिकली से पुनी दीटा क्रिएट कर दबो बा गोटे को डिलीट करिया को दबनी तो आमे कोन करबा ऑटो स्केलिंग ग्रुप को जाईकरी आमे डायरेक्टली एटा को ही एक्शंस डिलीट ऑटो स्केलिंग ग्रुप ही तमे डिलीट करिवो खाली मशीन डिलीट कले हबनी ओके डिलीट तो डिलीट होजी तो आपको जतले हम डिलीट करिबा जेतु से मशीन सब कोन ऑटो स्केलिंग ग्रुप द्वारा ही क्रिएट हेछि इट वाज पार्ट ऑफ द ऑटो स्केलिंग ग्रुप दोस servers right those instances were the part of the auto scaling group those servers were created by the auto scaling group now when we deleted this one what will happen it will also delete the servers let's see shutting down automatically तो तमे कौन करिवो ना
से ऑटो स्केलिंग ग्रुप को तो डिलीट करियो से कौन करियो जो सर्वर दीटा क्रिएट करची से ऑटोमेटिकली ताको डिलीट करता हो ओके सो बुझी पालो गाइस किछि डाउट अछि हम डिस्कशन करबा